कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। Good evening. For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. Thank you very much. परराष्ट्र मंत्रालयाची ही पत्रकार परिषद पार पडली। पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केल्याचं सचिव मिस्री यांनी असं म्हटलेलं आहे। पाकिस्तानने स्थिती समजून घ्यावी आणि अतिक्रमण थांबवावं असं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे। पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं गेलं असं सुद्धा सचिव मिस्री यांनी म्हटलेलं आहे। पाकिस्तानने शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केल्याचं वक्तव्य सुद्धा मिस्री यांनी केलेलं आहे। पाकिस्तानच्या हालचालींवर भारतीय सैन्याची करडी नजर आहे। नुकतीच काही क्षणापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाची पत्रकार परिषद पार पडली आणि त्याच परिषदेदरम्यान सचिव मिस्री यांनी हे वक्तव्य केलेलं आहे। पाकिस्तान या उल्लंघनाला जबाबदार असल्याचं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे। परराष्ट्र मंत्रालयाची पत्रकार परिषद पार पडली आणि पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं गेलं असं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे।